Bharatipuram is also going to join. Yes. Bharatipuram is also going to join. Then we'll have 50. Everyone. Good morning, everyone. Welcome to Industrial University, and with again a new turn in the turning point with a doctor today as a speaker for us, which is much needed. And as goes the age-old saying that a healthy mind in a healthy body, though it is an age-old phrase, but yet in the present time it has proved to be very, very befitting. And especially COVID-19 has been an eye-opener for all, that how health has to be given priority. Not only priority because it impacts all the aspects of our life. So today, without much delay and much ado, I would like to invite Pradeep sir for setting up the contest. And over to Pradeep sir. Thank you so much, Dr. Namrata. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Vyas. Good morning, Ms. Jyoti, and very good morning to Dr. Pratik. Yes, good morning. I can see Akash as well. So it's very right time, I think. बहुत सारा means I again since we speak in Hindi, so हम हिंदी में ही बात करते हैं. So अभी ऐसा है कि बहुत सारा confusion धीरे धीरे हालांकि कम हुआ है पिछले 1-2 महीने में कुछ कम हुआ है. गोलेरिया साहब ने भी बोला है कि शायद थर्ड वेव नहीं आएगा. बट सबके माइंड में कहीं ना कुछ डर तो है ही. और अभी बहुत सारा देखो कि थोड़ा फनी इंसिडेंसेस भी होते हैं. अचानक से लोग मास्क पहन लेते हैं, फिर उतार देते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर मास्क पहन लेते हैं. कुछ लोग गाड़ी चलाते समय मास्क पहन रहे हैं. तो बहुत सारा कंफ्यूजन केओस है. जिसको जो समझ में आता है उसी क्राउड के साथ कुछ समय पहले लोग खड़े रहते हैं, फिर अचानक से मास्क पहन लेते हैं, याद आता है. कुछ लोग तो नहीं पहनते हैं, फिर तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि करें क्या, कैसे करें. इसके अलावा भी बहुत बड़ा सो व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ एंड ऑलरेडी नम्रता मैडम ने बोला कि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी मस्तिष्क का निवास होता है. सो हैविंग दैट नॉर्मली भी आदमी को स्वस्थ रहना ही चाहिए. सो ये तो नई सिचुएशंस हैं या सिचुएशन चेंज हो रही है. और वैसे भी जो अगस्त या जुलाई से लेके सितंबर का महीना होता है या अक्टूबर का टाइम होता है, तो दिस इज ऑलवेज सो all bacteria and virus are on fire. They always fire with all the cylinders in this time. तो वैसे भी टाइम है, तो ये बहुत सही समय है डॉक्टर साहब को बुलाने और बात करने का. तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया. सो आई एम सो थैंकफुल टू डॉक्टर प्रतीक. हम कैडला फार्मा में हैं. कैडला फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. सो डॉक्टर प्रतीक की क्यों? बिकॉज ही definitely stands apart. It's not I am saying in front of him. So that I already deal with other doctors as well. बहुत first and foremost, his understanding is absolutely clear. What to talk and how to talk and to whom who should say what. बहुत शांत है, बहुत गंभीर स्वभाव के है. और कभी भी मतलब मैंने उनको जो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि you should always preach what you practice. So उनको हमने वो करते देखा है. He always very humble, very calm and cool. Otherwise, कॉर्पोरेट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि लोगों का दिमाग खराब बहुत आसानी से होता है, या लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, या लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. बट उनको हमने बहुत कम ऐसा देखा है, या शायद नहीं देखा है. So he stands apart from this rat race, rather we say. So I thought कि he is the right person to today address these students. और वो जुड़े भी रहते हैं कहीं ना कहीं से स्टूडेंट से किसी ना किसी तरीके से. सो दिस विल बी ए रियली गुड टॉपिक. सो दिस विल बी बेसिकली इंटरव्यू. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस. सो वी विल हैव an interactive session, and I request all the participants, you have any doubt, any query, कुछ मन में भी है तो आप पूछ लेना. ऐसा बोलते हैं, if you ask a question, you are a fool for 5 minutes. If you do not ask a question, you are a fool forever. So choice is yours. You want to remain fool forever, you want to remain fool for 5 minutes. कुछ myth है, आपको कुछ doubt है, कुछ भी है, so he is a right person. He is absolutely right person to answer. He has exposure and experience of working in one of the greatest companies of India. So बहुत अच्छी companies में सर ने बहुत अच्छे levels पे already काम किया हुआ है, plus उनको practical experience भी बहुत सारा है. So I think today we will he will share his experience, and this will be a great opportunity for each one of us to take the entire benefit of Dr. Pratik Patel. So over to you, Dr. Namrata again. Thank you, Pradeep sir,
for beautifully setting up the context. You have thanked Dr. Pratik, and I thank you also, along with Dr. Pratik, because this is how the chain of thankfulness, gratefulness, and expressing our gratitude continues. So without now much delay, I invite Akash Pandey. He is a BTech first semester student of Computer Science and Engineering to introduce the speaker today. Akash, you can unmute yourself. Yes, thank you, ma'am. Namaskaram, everyone, and a very good morning to all students and panelists who have joined today. Today, we are here to have a session on well-being in the new normal by Dr. Pratik Patel. Before starting the session, I would like to give a small introduction of Dr. Dr. Pratik Patel is a healthcare service professional with a doctor in medicine, MD, focused in pharmacology from Kasturba Medical College, Manipal. He is part of Cadila since January 2020. In his current role, he is supporting the new product launches, clinical trials, training of internal stakeholders on product, scientific activities for product therapy in dermatology, pain management, and critical care illness. Now I would like, sir, to start the session and some light on the topic. Thank you, sir. Thank you, Akash, for introducing me. And I am grateful to the Industrial University, Dr. Bajaj Madam, Dr. Vyas sir, everyone. And though Pradeep described, but see, these are all normal behaviors we evolve actually. And we all learn in this journey of wherever we are, or in whatever profession we are. Okay, so that is what we believe, because end of the day we all are a human being, whatever role we are playing in this society. So those common traits, I also personally feel are uh, they have to be there. They have to be embraced wherever the person is working or being there. So we can start the session now, Pradeep. Sure. So thank you so much again. So एक और आप लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है. आई थिंक इट्स अ हिडन अट्रैक्शन. ये हमने डिस्क्लोज नहीं किया था जानबूझ के शुरू में. He also deals with cosmetology, right? So he is an expert in derma segment, so skin related issues for the beauty related things. So he is also expert in that. So जिसका किसी का personal भी है तो आप पूछ सकते हैं उनको. He has extremely good knowledge, right? He knows the skin in and out. So ये एक hidden सबके लिए वो है जो हमने सोचा है बाद में सरप्राइज सबके सामने खोलेंगे. तो किसी को अपनी त्वचा के लिए भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अलग से. Anyways, so that always you can shoot the queries in the meantime. So good morning everyone again. So sir, generally अभी तो एक चलिए एक एक्सेप्शनल टाइम चल रहा है, एक थोड़ा सा अलग टाइम चल रहा है, बट जनरली भी कुछ टिप्स हमको दीजिए जो हमको हेल्दी रहने में हेल्प करे. True. So Pradeep, actually when we were discussing about the topic day before yesterday, when you called me and you said this is the thing which we are going to talk. So anyway, a lot of things have been talked. Means when the COVID came, when entire world was put into the behind the bar, I would say actually, and it was forced. So many things were forced, but later in that 3 to 6 months time, everybody was learning, including doctors, including healthcare practitioners. First 3 to 6 months was the learning. Now, if you ask me honestly, what are the I would say health and wellness pillars? So those have not changed. Even if I talk before COVID era or after COVID era, it was COVID which forced mankind to look at those things in from the different angle actually. But otherwise, those 5 pillars, I would say, in fact, of health and wellness. So they are commonly, means if I have to describe in a nutshell, they are focusing on healthy diet, sleep, exercise, lifestyle, and hygiene. So these are the 5 pillars if I have to describe these, which are
part of health and wellness. Now they are in relevance to COVID-19 as well, and beyond COVID-19 as well. Okay, so diet, if we talk, definitely home cooked food, uh, seasonal fruits and vegetables. Okay, avoiding junk food. So these pillars are anyway were there earlier also, but COVID-19 have forced human to look into those things in a better way. Sleep, appropriate sleep is very much important to have a better immunity of the person, because anyway, whether it's a COVID-19 infection or any bacterial or viral infection, immunity is the key to fight off. Because I would sim the this is one example I give everywhere actually. Means whenever I interact with our internal team also. If two friends have had any vada pav, for example, or dabeli, because that is a common fast food here in Ahmedabad. So if five friends were there, next day two have developed diarrhea or vomiting, for example, you might find not all have developed the same symptom. Okay, so the reason is the three were immune. Their immune system was good enough to fight. So these five pillars will are going to anyway help. So healthy diet, healthy sleep. If the person is involved in exercise, maybe see the exercise is a vast word actually. Here it should not be very much forced upon. It should be at the convenience of the person, whether it be whether the person is involved in the yoga, is involved in any brisk walking, jogging, at whatever his comfort is. Okay. So there are no certain rules here, but it should be part of the routine regimen. Lifestyle means how the person look at own lifestyle, including stress management, because here, especially in COVID, post COVID-19, we are forced with a lot of information now, so many things going around, even including entertainment front also. When the person is free, typical example, in the OTT platform or in the digital era, so many things are going around. Now person has to filter out at what content he is going to look at. It can be means and to focus upon. So at every day evening in my 1 hour free time, I will be spending that 1 hour thinking that I am enjoying. But the thing is, there could be some hidden stress factor because I am spending times on the maybe different social platforms. Okay, so we don't realize, but those stress related factors are also very much important. Exposure to the fresh sunlight, fresh air, giving family time, spend time on the hobbies. That is also a very integral part. Be it a 20 minutes, I would say 2 times in a week, but this should be part of a lifestyle. And hygiene practices end of the day, because हर 20 मिनट में जो हाथ धोने का हमने बताते जब कोविड आया. Okay, so 20 seconds hand washing. So this practice were anyway earlier there. So the hygiene means practicing cleanliness. So these are the 5 pillars, I would say: diet, sleep, exercise, lifestyle, and hygiene. So they were anyway there before COVID-19, but now we should practice them at whatever possible. That is what is my response. Thank you. Then let's more dwell upon each one of things. So when we say diet, sir, so at this age, 20, 25 years of age, so what should be the essential part of the diet of everyone? At least he should have this much. So see here, when we talk about means there should be a separation, means what should be there in the good amount, means daily जो भी खाते हैं हम, whether morning में खाएंगे, afternoon में और evening में. Even कई बार ये भी मैं ये example cite करता हूँ कि whatever elders used to I would say follow. For example, गांव, because I belong to a small village in Idar Taluk. My elderly grandparent always used to have food at 10:30. Okay, evening food before 7. Nowadays, whatever 16 to 8, the intermittent fasting, it is the same. In the US, people are spending so much of money, and now people in India. But intermittent fasting, हमारे जो grandparents थे already follow करते थे. Okay, like दिन में 2 बार meal लेना है, और वो भी जो ना भूख है आपको. बाकी आज की डेट में अगर हम बोले morning breakfast, king like breakfast, बाद में whatever slogans are there, they are more of a customized. So we don't need to follow certain things which are coming from, we have so many good things which are already practiced in the beginning in our country only. So person has to definitely
when it comes to diet definitely plays very important role, like increase in the diet rich of vegetables, seasonal vegetables. Okay, it can be fruits, definitely again seasonal fruits, because आज तो मान लो हर कोई फ्रूट आपको 12 महीने मिलता है. एप्पल आपको 300 रुपए किलो नॉन सीजन में मिलता है, सीजन में वही चीज आपको 80-90 रुपीज मिलती है. बट डेफिनेटली द प्रैक्टिस शुड बी टू हैव फोकस ऑन द सीजनल फ्रूट्स. Then nuts, if patient is not allergic, definitely he can have a small quantity of nuts, almonds, or even groundnut also can be very important rich source, especially in the winter or pre-winter era. Some amount of spices जो already हम लेते हैं, like garlic, ginger, definitely black pepper हो गया, and herbs like tulsi or tulsi, ginger. So this can be a component of a routine diet. Whenever the carbs, proteins, तो वो भी हम लेते हैं, beans in the form of roti, chapati. But in that say, what they say कि जो भी हम grains लेते हैं, whether it's गेहूं or so they should be whole. Means मान लो अगर मैं बताऊं तो सिंपल डिफरेंस बताऊं तो सिंपल मान लो नान्स और जो हम खाते हैं बाहर जाके, so they contain मैदा definitely. So any मैदा will take a lot of time to digest. So better we should avoid, we should prefer either the bakri or typical chapati roti, and that is also in the moderation. जो कम खाना है, कम करना है, वो definitely fast canned food, lot of processed foods are also there. अगर आपको means dependency है where you are alone and you have to make certain arrangements temporary, then अगर हम लेते हैं that is fine. But वो that should not be practiced for every day. Okay, high sugar foods, प्रोसेस ग्रेन्स हो गए, हाईली फ्राइड फूड्स हो गया, सोडा बेस्ड ड्रिंक्स हो गए. ओके, मान लो गर्मी में दो अभी तो कल्चर थोड़ा कम हुआ है, बट पहले बहुत होता था कि कोक हो गया या फेंटा, whatever beverages are there, people used to have in summers in 45-46 degrees centigrade. Now people have started realizing this, so there is some shift, but definitely it is not the level it is required. So यही चीज जो हमारे आसपास है वही हमें यूज करनी है. मेन तो डाइट का यही मींस we have so many good things available with us, those only should be taken into the proper amount. Right. Thank you, sir. एक सर, आपने कॉन्सेप्ट तुलसी हमने सुना है. कहा था. जी सर, एक क्वेश्चन था. Pardon? ओके, सो एक कॉन्सेप्ट हमने सुना है डॉक्टर साहब की वाइट अवॉइड करना है, बी रेसिस्ट व्हेन इट कम्स टू चॉइस ऑफ फूड्स, बी रेसिस्ट. तो आप जितना वाइट अवॉइड कर सकते हैं, वेदर इट इज वाइट ब्रेड और इट इज वाइट सॉल्ट और इट इज वाइट शुगर, सो जितना हम यहाँ थोड़े रेसिस्ट हो जाए चलेगा. तो हम थोड़ा वाइट को जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा. सो जैसे वाइट सॉल्ट, अभी हर चीज का ऑप्शन अवेलेबल है, पहले कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, बट आज हमारे पास मार्केट में शायद सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यस. सो इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली इवन वी हैव एग्जांपल्स. मेरे घर की बात बताओ कि इवनिंग में मान लो इफ वी से कि चलो वी कैन हैव अ गुड खिचड़ी, देन देयर इज अ मेंटल ब्लॉक कि खिचड़ी खाएंगे तो हमें भूख हमारी नहीं कम होगी. बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आपका 75% कंपोनेंट उसमें मूंग है, 25% राइस है, तो ऑब्वियसली इट इज फुल ऑफ प्रोटीन. विथ वन बाउल आपका एनीवे पेट भरने ही वाला है, बट देयर इज अ मेंटल ब्लॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मींस हमें एक तो एक्नॉलेज करना है व्हाटएवर थॉट प्रोसेस इज कम, एंड देन उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो देन देयर इज अ मेंटल शिफ्ट व्हिच विल हैपन. सो अनलेस एंड अनटिल वी एक्नॉलेज फर्स्ट एंड देन फर्स्ट एक्सेप्ट इट एंड देन प्रैक्टिस इट, without that we cannot comment and conclude actually. So that is very much required. हमें होता है कि ये करेंगे तो नहीं होता है, बट वो चीजें रिक्वायर नहीं होती है. कई बार रात को मान लो एक दिन भूखा भी रह लेंगे तो हमें लगता है चक्कर आ जाएंगे, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इतना कार्ब्स भरा हुआ है हमारे बॉडी में, वही से ही कम होना है. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड एज यू राइटली पॉइंटेड, जो व्हाइट पॉइजन्स है, इवन शुगर में लॉट ऑफ रिसर्च हैपेंड इन यूएस इन द न्यूट्रिशन, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड वहां से बहुत स्टार्ट हुए, क्योंकि वहां की इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे ऑपरेट करती है यूएस में. यूरोप की इज मोर एक्चुअली ऑर्गेनाइज है, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. यूएस में इट इज मोर ऑफ अ प्राइवेट, दो इट इज गवर्नमेंट रन बट लिंक विद द प्राइवेट. सो कोक, आई कुड रियलाइज कि कोक का वहां पे कंपटीशन था विद वाटर, नॉट विद फैंटा एंड पेप्सी. Though we see that the Coke का direct competition था when they launched,
it was with the water. So water bottle in the refrigerator has to be replaced with the Coke. So definitely, and so many means advertisements और वो सब का influence हमारे ऊपर आता है. So ये भी चीजें मीन सी एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. आज एक्सेस हो गया है ह्यूमन. अगर हम बात करें तो सबको एक अच्छा बनने की कोशिश करना है. समाज में हम ग्रो कर रहे हैं एवरी डे. पीपल आर नाउ, if I talk 20 years back in my village, definitely there were 3 to 4 families who were coming out of village. Now there are 60 families from the village who have settled in Gandhinagar. I mean, there are so many examples of different villages actually. So people have become more prosperous. Access to the things have become easy, but at the same time as an individual it is our responsibility what to choose, what to pick. Okay, because पैसे से काफी सारी चीजें आसान हो गई है, वो अच्छी बात है, पर उसमें अच्छी चीजों का एक्सेस हम ज्यादा करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है when we talk about health and wellness and general well-being. थैंक यू सर अगेन फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन दिस. फिर से आपका एक अच्छा आइडिया सर मेरे को लगा, आपने बोला ओल्ड फैशन. अगर हम ओल्ड फैशन फूड की बात करते हैं तो पहले हमारे घरों में हम लोग ज्वार बाजरा ये सब ज्यादा खाते थे. तो ये गेहूं शायद पता नहीं महंगा था या अवेलेबल नहीं था, तो लेकिन उस समय स्वस्थ लोग ज्यादा रहते थे, ऐसा है कुछ? इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे आज की डेट में मुझे नहीं पता वो फैक्ट, पर पहले हम सुनते थे एवरी 90 किलोमीटर देयर इज अ चेंज इन द लैंग्वेज एंड चेंज इन द ड्रेस पैटर्न. सो द कंट्री इज वेरी मच डाइवर्स. एंड ऑल्सो इवन इन गुजरात, इफ आई टॉक, द प्लेस वेयर अवर नेटिव प्लेस इज इन साबरकांठा, नॉर्दर्न पार्ट, वहां पे गेहूं एंड मक्के का कल्चर ज्यादा है. सो मकाई आज की डेट पे भी बोते दो हमारे घर में बनाते हैं, बट उस टाइम पे पहले लेबर्स को देने के लिए देते थे, आज भी बनती है. तो वैसे ही ज्वार और बाजरे के कंसेप्ट है जो, बिकॉज आई हैव बीन टू कर्नाटका, आई स्पेंट 3 years in Manipal. It was in the coastal belt. My batchmate, he was from northern Karnataka, so he invited me during means exam time. We both were studying together actually, both were married at that time, but हम एक जगह, तो उसके घर पे खाना होता, तो वहां पे ज्वार की रोटी डेली बनती थी. तो डेफिनेटली मैंने पूछा, देन he told कि every day they have ज्वार रोटी and there are so many pockets in India. So जो कल्चरल चीज बनी हुई है वहां पे देर आर सर्टेन रीजंस. मान लो इफ आई टॉक अबाउट साउदर्न पार्ट, तो साउदर्न पार्ट में जो पूरा कोस्टल बेल्ट है, फ्रॉम आफ्टर महाराष्ट्र, इफ वी टॉक गोवा कारवार टिल केरला, दे ईट boiled rice. So they are very much nutritious. The reason is they don't cook actually chapati, because the absorption of a human depends on the external environment also, whatever sunlight is coming wherever he is living. So जो बनी हुई है चीजें, there is some reason. हम बोलते हैं कि तब लोग अनपढ़ होते थे, पर अनपढ़ तो होते थे बट समझदार तो थे. So there were logical reasons why things have come. When it comes to the food part I am talking about, so उसको डेफिनेटली हम निगेट नहीं कर सकते. मान लो हम आज के दिन मान लो गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, व्हाटएवर, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं डेफिनेटली, एंड सम कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स. तो उस दिन मींस इन दोज डेज दे यूज्ड टू रिलाई ऑन दिस ओनली. मींस कार्बोहाइड्रेट्स वाज द ओनली सोर्स ऑफ देयर एनर्जी, बट दे यूज्ड टू वर्क अ लॉट. मींस फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता था. So if you have a food early, means at 10:30, and then he is going for a rest, afternoon से फिर work start होता था, evening में भी. So every day they used to physically work 8 to 10 hours. So उनको भूख भी वैसी लगती है, absorption भी अच्छे से हो जाता है. आज के डेट में हमारा फिजिकल नहीं, हमारा मेंटल वर्क ज्यादा होगा, where we need to apply the brains actually. So in that case definitely we don't need that much of carbohydrate honestly, because energy consumption हमारा daily है वो कम पे भी काम चल जाता है. Okay, so if I talk about for myself only, at our office we have fruit dish available every day afternoon, or we have full meal. So earlier when I used to take, लगता था कि चलो भूख लग जाएगी, it would happen for initial 15-20 days, but later it has become कि चलो ले लिया fruit dish और साथ में 1 bowl of curd है, it is good enough. Means क्योंकि दूसरा तो हमें physical work तो है नहीं. If I have a lunch at around 1, and so many colleagues are there, not only being a doctor, there are non-medical people who are having fruit dish every day in the afternoon. So once it become routine, then you are habitual. So that again, there are no certain rules कि जहाँ पे है तो उसको change कैसे करना है,
बट हाँ एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम सर्टेन प्लेस टू अनदर जियोग्राफिकल प्लेस, ही इंसिस्ट कि मैं मान लो फॉर एग्जांपल गुजराती मूव्स टू चेन्नई, he insists ki every day I will have my Gujarati food. So that while I have interacted with so many colleagues, what I believe कि उसको वहाँ का ही food daily consumption में लेना चाहिए as far as possible rather than practicing his own food there. क्योंकि if he is going to spend so much of time there, then there are food practices which have come due to certain reasons. So there is no need to change that. Like I used to have rice and eating the breakfast in most of the days in my Manipur because it was easily available, and I don't expect I will have aloo parota every day there. Okay, or I have poha every day there because that is not practiced as a food habit. So whatever is there, there are certain reasons behind that, and we should also try to imbibe in our day-to-day habit. That is what is the conclusion I would say. So whatever is existing, be it in the jawar, bajra, I think it is more means digestion may heavy, that's why people consume in winter more actually. So but yes, uh, in grains the concept is कि whole form में लेना चाहिए, जितना भी refine करते हैं उतना absorption उसका कम होता है. That is the fundamental rule actually. So whatever carbohydrate, it should be very least refined. As means it should be in the more whole form. That is what is the rule remains the same. So thank you sir again for putting this. So हम लोग देश वैसा भेष वैसा अन्न. सो जहाँ पे आप जा रहे हैं वहीं का अगर आप खाना खाएंगे तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा. तो इफ यू आर गोइंग टू सम अदर पार्ट, डोंट ट्राई टू अपना घर वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है. लोग दुखी हो जाते 10 दिन में, दुखी सर हमको घर जैसा खाना नहीं मिल रहा है. अरे वहां का खाना खाओ. इफ आई गो टू साउथ आई बिकम साउथ इंडियन, इफ आई गो टू नॉर्थ आई बिकम नॉर्थ इंडियन. वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, हम पराठा हजम कर सकते हैं, बट साउथ में हमको राइस प्लेट लेना ही पड़ेगा. या हम जिद पे हट जाएंगे, नहीं हम तो सर खाएंगे जो खाते थे वही खाएंगे, तो फिर वो इट विल अननेसेसरी. तो जो जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक या टोपोग्राफिकल जो रीजंस हैं उसके हिसाब से ही वहाँ का खाना ऑलरेडी वहाँ का जो लोगों ने पहले से ही मान के रखा है और उसमें ही वो स्वस्थ थे. जब हम उसको चेंज करने या चैलेंज करने की कोशिश करते हैं तो शायद हमको प्रॉब्लम उसमें ज्यादा हो जाते हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो जैसा आपने बोला सर कि रिफाइन नहीं जाना है, होल अगर खा सकते हैं किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, दैट इज ऑलवेज बेटर. सर एक मैंने और भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इट इज ग्लूटीन फ्री एंड कैसीन फ्री कॉन्सेप्ट, जो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. और इसकी वजह से सिंस आई नो वेरी पर्सनली, सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हुए हैं. सो इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, अभी वो चीजें मिलने भी लगी. पहले सिर्फ यूएस में या कनाडा में जीएफसीएफ का कॉन्सेप्ट था या वो चीजें वहां मिलती थी, अभी यहाँ थोड़ी मिलने लगी हैं शायद. Correct. So here the gluten free diet means, see, there is always intolerance to certain protein. Means our body does not have that capacity, I would say, to absorb the diet. Okay, so gluten free and casein free diet is means it is particular person is having intolerance, he will not be able to absorb it very much properly. For example, अगर हम gluten की बात करें तो गेहूं और या मेनली गेहूं जो हम डे टू डे में खाते हैं उसमें ज्यादा पाया जाता है. कैसिन जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो उसमें पाया जाता है. तो अगर स्पेशली ये सब चीजें ना कई बार मीन्स कैसिन का आई रिमेम्बर बिकॉज वन ऑफ द चाइल्ड in our nearby relative had means this is the story before 9-10 years actually, 2010-11 I'm talking. That child always used to have a cry in the evening. Now definitely they visited a pediatrician 2 times 3 times, and then he was school going children, I think around third or second or third standard. Later they realized he used to have a milk every day in the evening, not in the morning actually. So after 2 months the diagnosis was made. First time 2 बार तो ये भी हो गया कि एग्जाम से पहले हो रहा था तो पेरेंट्स ने ये ब्लेम लगा दिया कि बच्चों को एग्जाम नहीं देनी है डॉक्टर साहब, इसलिए और एवरी टाइम ही इज क्राइंग. एंड डेफिनेटली बिकॉज व्हेन parents take a child to the pediatrician, definitely doctor relies more on the parents history
rather than observing or imposing his understanding and enforcing the parents. So then it became it was known that he was having intolerance to the milk actually, and that is why after having milk every day in the night, and then because obviously milk पीने का habit हमारे यहाँ पे ज़्यादा day time है, day and night का ज़्यादा है, that is the most common. And day का सबसे ज़्यादा, that is another part, but every day night को लेना there will be some exception. So then it took little time, and then the doctor just gave up this much that you should avoid that. And but that does not mean that he cannot have any. I mean they can I would say they do better with the curds actually. Sometimes those who have milk intolerance, they can have curds during the daytime. And the only thing is first the proper diagnosis should be made why this person is happening, and better he should avoid whenever there is allergy. So allergy here, one example I would take in my family only, with my wife only it happened. जो bottle guard दूधी हम खाते, so she had 3 times allergy. It had happened. So every time when it happened, and the severe, it happened in 2014. The eyes were swollen actually. It was watery and redness. So then I found कि 3 महीने पहले हुआ था, मे बी तब हमने या तो 1 महीने पहले तब क्या बनाया था सब्जी, and somehow it was coincidence that we came to know. So जब ये 2014 में जब फर्स्ट टाइम मींस जब सीवियर हुआ, we took her to the doctor कि सब ये हुआ है, क्योंकि उससे पहले माइल्ड हो रहा था, दवाई लिया कम हो रहा था एंटी एलर्जिक के लिए. तो मैडम को मैंने बताया, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मैडम 2 बार का हिस्ट्री है कि ये सब्जी बनी है घर में और हुआ है. तो मैडम जस्ट लाफ, शी टोल्ड ऐसा बोलेंगे तो घर में खाना नहीं बनेगा कल से, शी विल हैव एक्सक्यूज. मैंने बोला नो नो मैडम, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड लेटर वी रियलाइज कि जो बॉटल गार्ड के ऊपर जो व्हाइट ड्रेसेस आते हैं, फॉर शी इज हैविंग एलर्जी टू दैट. सो वी डोंट हैव बॉटल गार्ड, मींस हैविंग दूधी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बनाते हैं तो जो कट करने के टाइम पे जो एक्सपोजर होता है इसको, सो शी इज इंटॉलरेंट टू दैट. So any such thing, means not only gluten or casein, there are so many examples of allergen where person has to only identify कि what he is taking and then what is triggering. So sometimes allergic taste करवाने से कि कई बार पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो आज के डेट में इंग्रेडिएंट आते हैं प्रोसेस फूड में, जो मेन चीज लिए उससे नहीं होता है, और उसमें जो ऐड किया गया है उससे होता है. So we cannot conclude, means 8,000 10,000 का एक एलर्जिक टेस्ट करवा लिया, चलो निकल जाएगा, इससे मिल जाएगा. It doesn't happen. Okay, so and especially in medical practice, the things are not so much well defined. There are certain things which are there, but there is a lot of dynamicity, variability as far as the individual response is concerned to the external factors, and that varies a lot. So any allergy means the patient has to first go to the back when the things are happening repeatedly, and he should try to identify and eliminate those triggers. Right. Actually, sir, why I'm saying this, because in my home only, my kid is allergic to gluten and casein both. Okay. So हम लोग को इतना बड़ा शॉक लगा था कि now you imagine हमारे 80% फूड में ग्लूटीन या कैसीन तो होता ही है. Yes, yes. और हम बचपन से ऐसे ही कह के बड़े किए गए हैं कि आप ग्लूटीन या कैसीन मतलब गेहूं या उसके मिल्क के बिना तो आप कैसे जियोगे. Yes, yes. बट अभी इस चीज को 6 साल हो चुका है. Correct. And she doesn't take any wheat product and she doesn't take any milk product. बिल्कुल अच्छा है, she is very happy. पहले उसको स्टमक क्रैम्प्स बहुत होते थे, उसको पूरा दिन वो अपना पेट पकड़े बैठे रहती थी, तो हम लोग को लगता था कि पता नहीं क्या है, कैसा शायद खेल रही है, लेकिन now we can realize it was because of that. So हर एक चीज का only thing is we need to understand the pattern कि हमको ये बार बार क्यों हो रहा है. If the pattern suggests something, so we can go for the analysis and everything. अगर होता है तो हर एक चीज के बिना जिंदगी चल सकती है सर. हमने सोचा नहीं था कि गेहूं, और हम लोग ट्रैवल भी करते हैं, हम लोग घूमने भी जाते हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं, हम लोग रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते हैं, तो जाने के सबसे पहले हमारे पास जो है वो ज्वार या उसका आटा हमारे पास होता ही है. हम कपड़े बाद में रखते हैं, पहले ज्वार का आटा सबसे पहले पैक कर लेते हैं. तो अभी वो क्या है कि नाउ इट इज पार्ट एंड पार्सल की करना ही है, उसके साथ ही रहना है, तो उसके साथ ही खुश रहना हमको.
तो वो Yes. हमको आइडेंटिफाई हमने किया और उस पर एक्ट किया, या तो उस पर हम पकड़ के बैठे रहते। तो जो भी चीज हमको अगर बार बार कोई चीज तकलीफ दे रही है तो हम उसके बिना बिल्कुल जी सकते हैं। अगर हमको लगता है कि चीज खाने से हमको हर बार तकलीफ होती है, या हमको ये खाने से डायरिया हो जाता है, या तो उसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सबसे एसेंशियल कंपोनेंट बताए जिसके बिना मेरी बेटी एकदम खुश है, एंड शी इज सो फिट, कि मतलब हमसे ज्यादा फिट है वो। हम लोग तो अभी भी थोड़ा बहुत उसको देखने से थोड़ा बहुत हम लोग कभी गेहूं खा लेते हैं, हालांकि हम लोग भी पूरा अवॉइड करते हैं, उसके सामने नहीं खाते, ये मिल्क नहीं पीते हैं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। खाली ये है कि Yes. क्योंकि हम लोग ये चीज जानते हैं तो हम लोग उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जनरल पब्लिक क्या है कि वो कुछ अरे ठीक है कुछ नहीं होता है करके करते हैं, कि यार देखो नाली किनारे बच्चे खेलते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, हमको हो जाता है। अरे हर एक का इम्यून सिस्टम आपने बोला अलग है, हर एक का टॉलरेंस अलग है, हर एक का वो पेट अलग है, सब कुछ अलग है। ये डॉक्टर नर्मदा, ये है क्वेश्चन। सर ये जो आपने अभी बताया इंटॉलरेंस का, तो एक तो आपने बताया कि क्लाइमेट के हिसाब से भी हमें खाना चाहिए। जैसे साउथ में गए तो वहां का खाना जैसा देश वैसा अन्न। लेकिन अभी ये इंडिविजुअल के पर भी बात आ रही है कि वहीं पे हम रह रहे हैं पर एक इंडिविजुअल को कुछ पसंद है, एक को कुछ। तो क्या कुछ बॉडी का भी स्ट्रक्चर और ये सब चीजें होती है? क्योंकि हम लोग कई बार गुस्से हो जाते हैं कि भाई आप बहाना कर रहे हैं कि आपको ये नहीं खाना वो खाना है। तो घरों में अक्सर इसी चीज पे थोड़ा सा तकरार हो जाती है कि भाई कितना सबके हिसाब से बनाएं। बट ये बात सच्ची लग रही है अभी कि हर एक की बॉडी भी अपनी इंडिविजुअल है और किसी को कुछ सूट कर रहा है, किसी को सूट नहीं कर रहा है। तो इस पे ये कैसा समझा जाए अपनी बॉडी को, वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे हम चेक करें कि मुझे क्या सूट कर रहा है। मैडम, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सूट नहीं करने वाला वर्ग है, ऑनेस्टली वो कम है। मीन्स ज्यादातर लोगों को ज्यादातर चीजें सूट करती ही है। सूट नहीं होने की जो बात है, डेफिनेटली अगर मैं स्पेशली क्योंकि ग्लूटेन और केसिन से बात चालू हुई थी हमारी, तो ये चीजें कहाँ से आई कि मान लो ये क्योंकि बचपन में आइडेंटिफाई होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब बच्चा जब अपने फूड पे शिफ्ट होता है आफ्टर मदर्स मिल्क, तो तब चीजें जो उसको एक्सपोज होती है, ड्यूरिंग दोस टाइम ओनली ये सब चीजें रियलाइज होती है। अदरवाइज पहले तो नहीं पता चलेगा। और उसमें भी there is no one rule ki in the beginning only we will come to know, but definitely if there is certain pattern कि मान लो उसको हर बार बच्चे को हम दिखाने जा रहे हैं, बट उसको हर बार वो रिकरेंस हो रहा है, जो भी सिम्टम है, फॉर एग्जांपल क्रैम्प्स हो गया, क्राइंग हो गया, तो जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके बाद ठीक हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा है, तो देन ओनली नेक्स्ट स्टेप इज टू लुक इनटू दोस थिंग्स कि मान लो पर्टिकुलर फूड हैबिट के बाद ही ये चीजें ट्रिगर होती है कि नहीं। तो means this is a part of always a exclusion actually rather than inclusion criteria। means beginning में जो होगी तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये हुआ तो पता चल जाएगा कि इससे हुआ है, बट ओवर द टाइम ये पता चलना चाहिए। उसके लिए जो नॉर्मल डिजीज पैटर्न है उसके लिए हम मान लो मेडिकल एडवाइस लेते हैं कोई भी डॉक्टर की, दैट इज फाइन। बट वो 6 महीने साल में उसको वही चीज फिर से हो रही है, then only we should look at the factors as you rightly pointed out, and then only we can come to the conclusion based on the history। मतलब खाली अर्ली एज में हो सकता है, लेटर एजेस में जैसे वी आर ग्रोन अप तो भी तो ये Yes। डेवलप हो सकती है टेंडेंसी हाँ, में लैक्टोज correct। का ये हो जाओ इंटॉलरेंस। basically अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो देर आर क्लियरली डिफाइंड स्पेक्ट्रम्स। एक तो होता है अर्ली चाइल्ड एज ग्रुप वाला स्पेक्ट्रम, दूसरा एल्डरली वाला। So these two are the spectrum where the immunity is declining, actually at declining stage। Otherwise 90% means our immune component है वो most of the time it is fit unless and until there is certain medical disease जो immunity को कम करता है। Okay, तो ये दो एक्सट्रीम्स है, वहां पे ये चीजें आती है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं ना कि जैसे हम एज वी ग्रो हमारा मेंटली भी वी elderly we behave mentally as a of a child, भाई मींस देयर इज अनदर एंगल। तो उसका रियलिटी भी इम्यूनिटी के साथ भी है, इम्यूनिटी बिगिनिंग में कम होती है और एंड में भी कम होती है। तो लेकिन देयर आर एक्सेप्शन। कोविड ने तो बिगिनिंग और एंड दोनों को ही बिगाड़ नो दिया मैडम, है। तो कोविड डेफिनेटली मैडम इज एंटायरली अ डिफरेंट डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिसीज ही अलग था, और दूसरा कि इसमें एक पैनिक का भी माहौल दूसरे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इसमें करना सबसे सिंपल चीजें थी। मान लो किसी को सिम्टम्स आए तो पहले एक्नोलेज करना है, एक तो आइसोलेट करना है घर वालों से,
और बाद में टेस्टिंग करा के आपको रेस्ट करना है। मीन्स दिस, अगर ये किया पहले 5-7 दिन, 95% विल नॉट हैव एनीथिंग एक्चुअली। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि 4-5 डेज मेडिसिन लेके काम पे निकाले कि चलो ये तो रूटीन ही है, इसमें कुछ नहीं होता है, तो देन पीपल हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। अब हॉस्पिटलाइजेशन में भी क्या हुआ कि सब एनवायरनमेंट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि पहले मान लो कोई आईसीयू वार्ड में भर्ती होता था तो देयर इज अ पर्सन टू टेक केयर, इंडिविजुअल बेड पे केयर की जा रही। इस टाइम पे तो क्या था कि जो अंदर थे वो भी लड़ रहे थे, अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे, जो दूसरे को ठीक करने में लगे थे, और रिसोर्सेज भी कम थे। तो एक पैनिक का भी माहौल आया कि देयर आर पीपल हु हैव डाइड नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, ड्यू टू पैनिक इन द हॉस्पिटल। So the figures are not there, but person has developed the heart attack just due to the stress what patient has got, and that is the reality actually. So means there was a lot of, means COVID as a disease is completely different if we look at. तो पहले ये पता चला कि इम्यूनिटी इज इम्पोर्टेंट, बट ओवर द टाइम अगर बच्चों में भी देखे आज, तो बच्चों में कोविड हुआ है तो वो भी सिवियर बहुत नहीं हुआ है एक्चुअली। जो पैटर्न आई है कि वाई सम पेशेंट्स जो इनको ज्यादा सीवियर हो गया और कुछ पेशेंट को नहीं हुआ, तो वो जो हम बोलते हैं वो रिस्पॉन्स बॉडी का है, वो एक्चुअली कौन सा जाएंगे उसमें, कौन से नहीं जाएंगे, वो आज की डेट में भी परफेक्टली नहीं पता है। ऑनेस्टली साइंस डज नॉट नो कि कौन सा पेशेंट 5वें से 7वें दिन में सिम्टम के एकदम डैमेज होके प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसका परफेक्ट आंसर नहीं है आज की डेट में। बट देर इज अ सर्टेन पैटर्न, बेस्ड ऑन दैट वी कैन आइडेंटिफाई। मान लो कोई क्रॉनिक डायबिटिक है तो उसको थोड़ा कॉशियस रहना है। द पेशेंट इज हैविंग एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, लाइक ट्रांसप्लांट हो रखा है और इम्यून सप्रेस ड्रग पे है ऑलरेडी, तो ये मीन्स डॉक्टर विल ट्राई टू हैव अ क्लोज वॉच ऑन दैट। बट अगर ये नहीं भी होते हुए, देर आर सर्टेन पेशेंट्स हु हैव I would say turned up in the severe form without any reason and having the same treatment which other patient is receiving. So there actually the individual patient ka approach to the means I would say it was a more of a mental approach will play a very important role, क्योंकि पैनिक जो हुए है वो भी ज्यादा डिटेरियोरेट हुए। इवन इन माय क्लोज रिलेटिव्स, one of the patient, he was elderly, from day one he was not ready to admit, means there were no issue with the access to the care, means they could afford to the any hospital. There are so many examples in our society, but वहां पे जाने के बाद second day onwards मुझे घर जाना है, like that only. So he had spent 20-30 days like that, and he had a diabetic history, he could not survive till last. So means this is just one of the example, but otherwise जो दो एक ऐसे पेशेंट थे जो भर्ती हुए थे, लग रहा था कि ये बेचारे नहीं बच पाएंगे, they have come out, they were पूरा बिंदास, चलो ठीक है अभी आ जाएंगे करके। yes. So mental approach has also become very much important to such condition, कि when the patient reach to the setup, he has to accept and cooperate, and then things can become easy. सर एक स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आकाश ने पूछा है, इज Yes, गोइंग yes. ऑन रॉ डाइट विल इंक्रीज अवर एनर्जी थ्रू आउट द डे? Okay. Yeah. So see, Akash, a good question. Raw diet, first of all, the concept of energy depends again on the individual, means whether the person is involved in the kind of work where he is doing a physical activity. So then we will calculate the energy, means energy deficit diet definitely helps in the weight reduction. But रॉ डाइट लिया है तो एम्प्टी स्टमक होने का फीलिंग ज्यादा आता है पहले बिगिनिंग में लोगों को, बिकॉज मैं ये बात कर रहा हूँ ज्यादातर 90% लोगों की, 90-95% लोगों की, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि मान लो रॉ डाइट, रॉ लेंगे कुछ भी चीज, मान लो अभी पूरे सलाड्स ले लिया तो पेट नहीं भरेगा, बट ओवर द टाइम अगर उसके साथ रॉ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स के साथ कर्ड ले लिया, दूसरी चीज भी आ गई, या वन बॉइल्ड आपके प्रोटीन्स लाइक चना आ गया, so then there can be a good I would say diet where you can avoid typical carbs like means rice or roti, and you can reduce the consumption of carbohydrate, क्योंकि carbohydrate भी ज्यादा लेके वो बाद में बॉडी में कन्वर्ट होते हैं फैट में। So yeah, raw diet to practice, definitely it's a good idea, but it should be balanced with the proteins also at the same time. It should not happen कि मान लो मैं फ्रूट के फ्रूट ही लिए जा रहा हूँ and there is no other thing which I am consuming.
और salads भी लिए जा रहा हूँ. So definitely means I personally don't believe in stopping anything which person likes. Okay, for example, I have a lot of craving for good sweets actually. So I cannot stop eating sweets. That is the rule actually. And there is always a fight which happens with my wife every time. You are not able to reduce. Then I told, see, there are certain things. Even the principles of diet also says that means that you cannot avoid the things which you have, and there are things which are available. Then you can have in the moderation. The thing is, it should not be in the excess. And anything in the excess is creating so much of problem. So anything, be it a raw diet, definitely it helps to reduce the weight. That is very much known very quickly. Means if you stop rice and chapati, sugar and salt from tomorrow, okay, and next after 30 days you see your weight. Keep your dal and everything as it is. Okay, you will see the change in the without doing exercise. I mean, that is a rule actually. But definitely it has to means now I decided ki now from tomorrow it will be like this one. So like that we can stop. सर टाइम तो हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. एक्चुअली Yes. प्रोटीन ज्यादा लेने से भी यूरिक एसिड बढ़ने के Yes. चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि So मैं इसको कर रही थी good question. कि भाई चावल में ना खाऊं और रोटी ना खाऊं, और बाजरी पे ज्यादा रही, पर थोड़ा टाइम लगा, वेट लॉस डेफिनेटली हुआ, बट प्रोटीन ज्यादा होने से फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है. Yes, ma'am. So, madam, protein, I mean, uric acid especially, historically, the disease has come from the Western diet actually, because there are lot of meat-related products plus alcohol beverages, means beer and all. So, this diet is known to increase. Now, जो हम means अगर मैं vegetarian sources of proteins की बात करूँ, तो वो अकेली चीज इतना लेवल पे बढ़ाएगी नहीं ज्यादातर. बट हाँ, क्योंकि ये मीन्स अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है बाय एनी चांस, तो एक मॉडरेशन आना चाहिए कि अभी बढ़ गया है तो देन बी इट अ वेजिटेबल सोर्स मीन्स वेजिटेरियन सोर्स और नॉन वेजिटेरियन सोर्स, देयर शुड बी अ मॉडरेशन. बट ऐसा नहीं है कि जो हम डे टू डे जो हमारे मीन्स पल्सेस एंड ऑल के सोर्सेस है, लाइक मूंग हो गया या चौली हो गई, whatever, और मॉडरेशन ऑफ नट्स हो गया, okay, that will induce increase in the uric acid. And again, not every increase in the uric acid require a treatment, because that is also gray area so far, the holy grail, because we have got session on 24th of October with our one of the international speakers. So there there is no define कि इससे ऊपर का लेवल है तो you one person can be fit. मान लो 6 से ऊपर का है 6.5 पे, one person will not have a symptom, one person may have a symptom. Okay, but so that's why there are certain things which are not part of routine investigation everywhere. Okay, means lab पे changes मेरे में भी हो सकते हैं, आज आप में भी हो सकते हैं, बट क्लिनिकली में कैसा फील करो, that is more relevant and more important rather than following the lab reports always. But हाँ, अगर है तो आपको एक ट्राई करना चाहिए कि you modify your diet, then how you are able to bring down the uric acid. And that doesn't take too much of time if the things are followed with the proper expert advice by rheumatologist and physician and nutrition consultant. Again, sir, there's a myth ki, especially in this increasing age when the person is growing. So I think there's a myth ki we should avoid the calories and the fat, but I guess protein and fats are essential part of food in that age especially. So first of all, because I was dealing with the pain management and bone health in our company at that time, I while going through the literature, जो bone weakening concept है, whether if we talk in the female, the post menopausal age group, when the hormonal control goes off 45 to 50, and in male it is after 60 that starts actually. जो hormonal level decline होते हैं तो bone becomes weak. In that, what experts are saying कि 45 पे आप स्टार्ट करेंगे कि मैं बोन को हेल्दी करूंगा, that is not going to work. The person has a peak bone mass as a concept which is defined, and that happens between 20s, mainly in 20s. So 20s के अंदर
वेदर मेल और फीमेल का जो टिपिकल पैटर्न क्या था, उस पे भी 50s के बाद या 60s के बाद बोन हेल्थ कैसा रहेगा, वो कंपोनेंट ज्यादा मैटर करते हैं। यानी कि 40 के बाद जब पीक बोन मास बन गया, ऑलरेडी बोन आपके बन गए, जो वॉट एवर डेवलपमेंट होना था, देन देर इज नो मच थिंग विच यू कैन चेंज एक्चुअली। तो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन, कैल्शियम, दे आर ऑल लिंक विथ अवर, मीन्स कैल्शियम इज विटामिन डी लिंक विद द बोन, प्रोटीन डेफिनेटली फॉर मसल। एल्डरली में एक चीज है कि जिम का जो कंसेप्ट है, एक्चुअली जिम इज रिक्वायर्ड आफ्टर 50s ऑनेस्टली, बिकॉज जॉइंट जो हमारे डैमेज होते हैं ना, उसको अगर प्रॉपर मसल का स्ट्रेंथ मिले ना, so we can prevent. So gym actually and all the proper exercises, they are meant for elderly. एडल्ट वो ठीक है, वो ट्रेंड बना है क्योंकि कि हम चलो जिम ज्वाइन करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, but otherwise proper means simple muscle building exercises, they are more required for elderly, because after 50s and 60s, when your muscle mass is declining, you need to have that strength enough, okay, so that the muscular strength will provide the good strength to the joint. So that is why if you see, अगर घर में भी जितने भी नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, उसके बाद हमें डॉक्टर जो भी एक्सरसाइज बता सजेस्ट करते हैं, they are more related to muscles actually, not to the joint, if you could see. So that is why after 50, definitely I personally feel that those who can afford, they should have the at least one good trainer at home in the week or two, or anywhere it is possible, who can just give a basic stretching and related exercises, related physiotherapy to the elderly. We can avoid pain and arthritis if possible. I think this is a very good, I think, myth buster for everyone. So I think we had a very good myth busters and very. So you told us the 5 basic pillars, but I think one pillar today was means only one pillar died, and that is still not completed. It's a very vast topic, sir. So Yes. the topic which you have taken is very vast topic. I think a lot of myths which have been busted today. I had a question. Yes, Yes, madam. Good afternoon, Dr. Pratik. Good afternoon, madam. This thing, Ayurveda, recently after this COVID-19 situation, all of us have become very aware of diet. So recently what Ayurveda says is that you cook everything in ghee rather than oil. And all the dietitians who have started that consultancy after this COVID-19, they also recommend कि परोठा जो आप बनाते हैं, थेपला जो आप बनाते हैं, वो घी में आप बनाइए. So I have also started that this thing in my kitchen. We are preparing it in ghee, but would it not increase the obesity? So madam, honestly, when we talk about obesity, more of calorie. Yes. So when we talk about obesity, apart from ghee and oil, there are so many things which are related, honestly. Because recently I visited our farm. We are farmers basically from Idar Taluk. So we have that groundnut, mungfali. Mungfali bhi nikalne ka time aa gaya. So now what people are doing, they are getting the groundnut oil from the own groundnuts. Cold press. हाँ, cold press. तो पर वेदर हम अगर वो कोल्ड प्रेस करते हैं, हमें बाहर से रिफाइन खाता हूँ, अगर मैं मॉडरेशन में लूंगा तो ही वो फायदा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं मान लो अगर व्हाट वी से द मेथी का भजिया हमने बनाया तो किसी ऑयल में बना रहे तो अच्छा है, किसी में ऐसा नहीं है. डेफिनेटली ये जो मींस घी का जो आइडिया है ना, विच इज देयर ऑलरेडी इन द पंजाब. इफ यू सी द पंजाबीज व्हेन व्हाटएवर दे कुक एट देयर होम, मोस्ट ऑफ द आई वुड से दाल और जो भी तड़का उसमें घी का ही लगता है. तो इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द जो वहाँ पे अपना सरसों के तेल से बनती है चीजें, तो ये सब कल्चरल डाइवर्सिटी है डेफिनेटली, और उसके डिफरेंट रीजन रहे होंगे. बट if it is in the moderation, definitely it is not going to create any problem. मान लो अगर आपने थेपला भी brief quantity में बनाया है in ghee, with ghee, if taste, if you all are liking, it is good to have it. It will not cause any additional harm. Means there is not any means कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको हम quantify कर पाएंगे. मान लो
डॉक्टर भारती ने आज 5 फॉर एग्जाम्पल 4 थेपले डेली खाए हैं फॉर 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल. डॉक्टर नम्रता मैम ने ओनली 3 खाए हैं फॉर 1 ईयर. बट वी कैन नॉट क्वांटिफाई कि मान लो आपने 1 साल इतना खाया तो इससे ये डैमेज हो जाएगा या इससे ये बच पाएंगे. बट यस, जो भी है, वेदर इट्स इन ऑयल और घी, if it is in moderation, it is not going to cause any problem. Even in US, this again I am citing so many examples. People may not like why am I behind US today. Earlier they had this ghee आपको avoid करना है ये सब. Last 2-3 years they are means not before COVID only, they were focusing so much in the school health के campaigns भी लगे थे to have butter in your diet. Okay, because they realized later कि there are certain good things which are already existing in certain things which are available. But प्रॉब्लम कहाँ पे आई है मैडम कि घी आज से मान लो 30 साल पहले अवेलेबल था, उसका बनाने का तरीका अलग था, इसलिए वो चीज अच्छी थी. आज वो चीज जो ही है वो उसका बनाने का तरीका बदल गया है, इसलिए वो चीज डैमेज हो रही है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली. तो विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि चीजें तो वही ले रहे हैं, चीजें तो वही है. मान लो बटर मिल्क हो गया, छाछ हो गई, तो वो तो पहले अपने एल्डरली भी लेते थे, बट उनको भी तो डिसीज ऐसे नहीं हुए जो आज हम लोग सुन रहे हैं नियर बाय हो रहे हैं. तो वो मीन्स ये सब चीजें घी हो गया या ऑयल हो गया, ये सब जो नॉर्मली जो प्रोसेस से बने होते हैं, समटाइम्स इस चीजों का हम कंक्लूड नहीं कर पाते कि इससे ही होता है या उससे ही होता है. बट जो ओल्डर चीजें थी जिसमें कम केमिकल्स या कम एक्सिपिएंट्स आपको यूज करने होते थे, फ्रेश फॉर्म में थी, वो अच्छी थी एज फार एज आई मैं जो समझ पाया वो चीजों को. जितना भी हम मूव कर रहे हैं रेडीमेड चीजों पे, इजी एक्सेस पे, वो चीजें कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो कर ही रही है. दैट इज वी ऑल हैव टू एक्नॉलेज एक्चुअली, एंड दैट इज रिक्वायर्ड. कोविड ने वो नजरिया दिया है लोगों को. कोविड ने वो एक्चुअली एक थॉट प्रोसेस चेंज, सोचने का एक टाइम दिया है. डेफिनेटली वो पूरा चेंज कब होता है दैट विल टेक अ टाइम, बट this is from my end. Yes, thank you so much, sir. Quickly I will have views from Vyas sir, and Abhinand sir has also joined. Thank you so much, sir. Thank you, madam. So quickly we'll have reflection and reviews from Vyas sir and Abhinand sir who has joined. Vyas sir, if you are there. Hello sir. Yes, I was here only and I was listening. In fact, thank you, Pradeep ji, for bringing Dr. Pratik over here. Thank you, sir. You know, many myths have been cleared now. I'm also following certain diet plan, trying to be thinner. Good. But yes, in effort to get zero figure, I have seen they are losing lots of energy, immunity, and their strength. And that is not a good sign of good diet, I can say. And also, I agree with sir that if you eat calculating the calorie, you will not survive. Yeah. You eat and you try to burn those calories. That is the best way to survive. So rather than calculating what you are eating and how much to eat, enjoy your life, but at the same time, be healthy, stay fit. That is the very good idea. And I appreciate the approach and the suggestions given by the Dr. Pratik sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. My pleasure. So as you rightly said, it adds a pleasure. I mean, stress actually while we calculate the things, and because so many things we are doing, and your food, which is actually simple thing, which person has to enjoy, means be it in the moderation. उसमें भी फिर आप कैलकुलेट करके वो चीजों को चलो इतना ले लिया तो क्या हो जाएगा, अरे ये ले लिया. That is actually adding a lot of small stress every day, which we fail to realize. First of all, we fail to realize, and we are not going to achieve anything. Means ये सब चीजें किस लिए कर रहे हैं, अगर हम वो पूछे तो उसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा. हाँ, मीन्स वेट, ओवरवेट हो आप, इफ यू आर टू मच मीन्स एस्पायरिंग टू रिड्यूस वेट, दैट इज फाइन. और हेल्दी रहने का सबको अधिकार है और होना भी चाहिए, बिकॉज नाउ पीपल आर लिविंग लॉन्गर, दैट इज गुड थिंग. बट पीपल आर ऑन द मेडिसिन. There are more people who are living longer, but more people are also living on the medicine also. So ये दो चीजें ज्यादा हो रही है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि people have got access to the better health.
people have got access, people have become more wealthier, wiser. बट ये चीजों में के साथ में एक्चुअली वेलनेस और डाइट का कंसेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जो आपने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया अभी. Thank you, sir. थैंक यू. It's time now for Abhinand sir to say something. Abhinand sir, if you are there, because he seems to be a little busy today. Okay. No, sorry. Actually, I'm at campus busy with some team here. I'm going on, but it was nice to listen to Dr. Pratik and Thank you, also sir. to inferences from Dr. AP Vyas sir. It was a good topic, and hope children have learned and enjoyed it in this turning point webinar, and we look forward to such additional inputs. And going forward, I feel that mental health is going to be the key thing for everybody, for their growth, happiness index, everything. And the world is moving towards that scenario. Thank you, Pratik. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Abhinand sir. It's time now for Akash Pandey to say vote of thanks from student body. Akash, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir, for this wonderful session. I hope this will help our students to know the importance of good health and all over well-being. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Akash. Thank you. Thank you, Dr. Pratik. I think very long and elaborate session, but हालांकि हमने अभी 5 पिलर में से एक ही पिलर टच कर पाया है. So, अभी बहुत कुछ है जो आगे हो सकता है, चाहे स्लीप है या हाइजीन है या लाइफस्टाइल है, काफी सारे. तो लाइफस्टाइल थोड़ा हमने टच किया, बट हाइजीन है या स्लीप है, उस पर हमने अभी कुछ टच नहीं किया. मे बी इन कमिंग टाइम आपका थोड़ा हम लेंगे, तो पॉसिबल अगर होगा तो इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि डाइट एक ऐसा इतना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर एक आदमी का क्या पेट ऐसी जगह दिया है सेंटर पॉइंट कि हर एक आदमी उसके आगे ही नहीं जाता है. अब ये सच भी है कि लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उस क्या खा लें, कैसे खा लें, क्या कर लें. बट ये है जैसा आपने बोला सर कि खाएंगे जैसा वैसे ही फिर बाद में हो जाएगा. सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना भी जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, अगर फूड पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं लगाया वो होगा तो कुछ नहीं होगा. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर दिस. Input and output. Yeah, input and output is also very important. True. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Pratik Thank you, sir. Sequel हम रख देंगे ना डॉक्टर प्रतीक का. Sequel 1, 2, 3 on diet, on lifestyle, on sleep. Sleep बहुत important सर. मेरे ख्याल से जीवन में 2.5 सुख बहुत important है. एक है स्वास्थ्य और दूसरा है नींद, और आधा सुख है माया में. तो उस माया के पीछे वो 2 सुख भी चले जाते हैं, तो 2.5 सुख ही. तो ये बहुत अच्छा है कि डॉक्टर नम्रता, कोई दिन हम कॉस्मेटिक्स मतलब अपना स्किन का कैसे ध्यान रखना है वो भी सर से सीख सकते हैं. जी बिल्कुल He's expert in that. सर हम लोग सीक्वल जरूर रखेंगे, और बहुत अच्छा लगा हमें ये सेशन. एक्चुअली स्टूडेंट्स का 12:30 बजे टेस्ट था, तो आई फेल्ट थोड़ा सा उनको टाइम दिया जाए. So I thank everyone, starting from Dr. Pratik Patel. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you, madam. My pleasure. Sir, for bringing in such a wonderful speaker to us. Vyas sir, I thank you all. Bharti madam, Abhinand sir, Jyoti, of course, Jyoti madam is there with us, you know, patiently listening, because she also might have so many questions. Madam, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं मैम, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सर. उन्होंने जो भी हम लोगों को दिया है नॉलेज, इट इज वेरी गुड. थैंक यू सो मच. Thank you everyone. Thank you students for being with us, and best of luck for best wishes for your test. All the best for the exam. Yes. Thank you. प्रदीप जी आज ग्रीन में हो? सर आज ऑफिस में ग्रीन है ना, इसके लिए आज ग्रीन है सर. हम लोग भी सब ग्रीन है सर. सर आई एम वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट सर. Sir, me too. Me too. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.